आज का दिन देश भर के छात्र, उनके टीचर्स और माता पिता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ उनका उत्साह देखते ही बनता है, क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी परीक्षा पे चर्चा के जरिए देश और विदेश के छात्रों से मुखातिब होंगे और परीक्षा से जुड़ी परेशानियों पर बातचीत करेंगे, अपने अनुभव साझे करेंगे और बच्चों के सवालों के जवाब देंगे। यूं तो जिंदगी हर मोड़ पर इम्तिहान लेती है, जिसका सामना हम कभी हंसकर और कभी रोकर कर ही लेते हैं, लेकिन न जाने क्यों इम्तिहान के वक्त छात्रों को इतनी टेंशन हो जाती है कि पूछिए मत। इसका असर उन पर मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से पड़ता है और नतीजा ये कि ना तो पढ़ाई ठीक से हो पाती है और ना ही पेपर ठीक से दिए जाते हैं। ऊपर से टीचर्स और पेरेंट्स का प्रेशर सो अलग, क्योंकि हर कोई चाहता है इम्तिहान अच्छी तरह हो और बच्चों के अच्छे नंबर आए। ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छात्रों के मन को समझा और उन्हें लगा कि इम्तिहान से पहले छात्रों से सीधा संपर्क साधना जरूरी है, ताकि उन तक ये संदेश पहुंचाया जा सके कि पढ़ाई लिखाई करते समय जितना हो सके मन को शांत रखना चाहिए। उससे आप जो पढ़ रहे हैं वो आसानी से समझ आ जाता है और इम्तिहान देते वक्त याद रहता है और एक कॉन्फिडेंस बना रहता है। प्रधानमंत्री जी की ये पहल, जिससे छात्रों का मनोबल बढ़ सके और तनाव दूर हो सके। मोदी जी छात्रों से प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि बड़े भाई, मित्र और साथी के रूप में सहज बातचीत करेंगे। यहाँ एक इनफॉर्मल माहौल होगा और छात्र प्रधानमंत्री जी से अपने सवाल पूछ सकेंगे। प्रधानमंत्री जी बच्चों के प्रश्नों के जवाब देंगे और बच्चे बिना किसी स्ट्रेस के तैयारी करने, एग्जाम पर फोकस करने और बिना चिंता के अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए प्रेरित होंगे। There are close to 1,000 people inside Talkatora Stadium today. More than 15 lakh registrations were received on the MyGov app, with 12 lakh students and 2.7 lakh teachers. This is the 5th edition of Pariksha Pe Charcha. The first one was held in 2018, the second in 2019, the third in 2020. These were all town hall interactive sessions. The fourth one was held on the 7th of April 2021, but this was held online. And this is the 5th edition of Pariksha Pe Charcha, which is being held here at the Talkatora Stadium. The Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji conceptualized a unique interactive program, Pariksha Pe Charcha, where students, parents, teachers across the nation and also from overseas interact with him to discuss and overcome the stress emerging out of examinations in order to celebrate life as an utsav, a festival. There was a selection process of the participants. Creative writing competitions were held for students of class 9 to 12. Teachers and parents registered on the mygov.in portal from the 28th to December to the 3rd of Feb 2022. The theme for students was exam stress management strategies during COVID-19. And we see the arrival of the man of the moment. The mind, the thought behind Pariksha Pe Charcha, an interactive session with the students of India. The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, being greeted by the Education Minister, Shri Dharmendra Pradhan. This is a day for children,
by children. The focus is really on children, and here in the foyer we see this exhibition that has been organized here. कोविड विजय ये मॉडल है जिसके जरिए हम देख रहे हैं कि कैसे हमारे देश में कोविड से विजय पाई गई। एकता में आनंद, लोकल फॉर वोकल, ये कुछ थीम्स हैं जिन पर यहाँ पर हम काम देख सकते हैं। और ये हैं रुचिका कुमारी JNB कपूरथला से, जो कोविड पर विजय के बारे में बता रही हैं। और माँ का इंतजार, वो एक और स्टैचू है यहाँ पर। और ये पेंटिंग्स है जिसका थीम है पंचतत्व, the 5 elements. Most of these paintings have been made by Aminya Singh, who here is explaining to the Honorable Prime Minister the theme of each of the paintings. भूमि, जल, अग्नि, गगन और वायु के रूप में पंच महाभूत हमारी सृष्टि का आधार माने गए हैं। और ये आजादी का अमृत महोत्सव, हमारे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़े गर्व और उत्साह से मनाया जा रहा है। इस बारे में बहुत सी बातें सीख जाते हैं। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर बच्चे अपने जीवन में उनके आदर्शों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है स्वच्छता पर बच्चों का ध्यान। रिया विश्वकर्मा KV जमुना कोलियरी MP से हैं, जो बच्चों को ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के बारे में बता रही हैं। ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं, तरह तरह की चित्रकलाएं हैं जो हमारे देश की पारंपरिक of 75 years of India's independence and a celebration of the great heroes who guard our borders. And this painting, Indian Heroes, shows heroes of the pandemic, the doctors, the healthcare workers, media personnel, and the various other people who remained active despite all the dangers of the pandemic. Every canvas is a journey all on its own. A picture, they say, is a poem without words. And these are some of the fine works we are seeing of the students of various schools from across the country. Shubham Maji is showing his watercolors. He's from KV Jamtara, Jharkhand. Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. And through these watercolors, we see the expression of students of KV schools, Kendriya Vidyalaya schools, and Navodaya schools.
These are various projects that children from Bal Bhavan have made. The National Bal Bhavan is an autonomous body under the Department of Education that imparts non-formal education to children between the ages of 5 and 16. The idea here is to encourage children to think creatively, to be imaginative through activities which are entertaining. And we are seeing some of the creativity of the children of Bal Bhavan here. Expression through colors, monochrome, but beautiful nonetheless. By using simple everyday things, one can create objects of great beauty. This is P. Nitish Kumar, who is explaining to the Honorable Prime Minister the works of art from various Kendriya Vidyalayas. All children need is just a little bit of encouragement, just a bit of guidance, and they come into their own. The themes here include the need to be more eco-friendly and green. And there is a painting of the Honorable Prime Minister himself, rooms, and environmental conservation and climate change resilience. The children have expressed these themes in various ways using different materials, watercolors, oils, clay, to express how they see these themes. And these are the sisters Nandita and Nivedita from KV Kottayam. They teach Vedic maths. After having mastering Vedic maths themselves, they teach the magic of Vedic maths to their fellow students so that they can overcome the fear of maths. These two sisters took online free tuitions, but for certain sessions they requested the students to donate money to PM Cares, and close to 15,000 rupees were raised by an innovative device. Harsh Vajpayee of KV1 Rewa, Madhya Pradesh has developed it. It senses two parameters, temperature and pulse, and updates it to a Wi-Fi database every 15 seconds. Doctors get alerted of abnormalities by email and phone call. The two sisters have something else to explain to the Honorable Prime Minister. They're sharing their videos of how the classes were conducted and how magical Vedic maths is if you learn it. And who can resist the temptation to speak just a little more with the Honorable Prime Minister? This is a once-in-a-lifetime chance for these children. The Prime Minister always takes keen interest in innovations of all kinds. And this is a child prodigy who is sharing with the Prime Minister origami, Tej Kumar Patel from KV Gandhi Nagar, Gujarat. बच्चों ने डेवलप किया है. आर्यन कुमार जिन्होंने ब्लूटूथ बनाया है, ब्लूटूथ सर्विंग टेबल बनाया है, और ये है 3D प्रिंटर. Printers can be used for all kinds of innovations. One just has to keep innovating and experimenting.
With great confidence, the children sharing their innovations with the Honorable Prime Minister. That's a little radio transistor with Man Ki Baat. A 3D printed radio transistor. Who knows what all these children will develop and print in the future. In just a few moments from now, the Honorable Prime Minister will address these children inside the Palkat for the Honorable Prime Minister's arrival. The Honorable Prime Minister will answer questions of children from all across the country. Some of this will be done virtually, while there are some children who are present here who will ask their questions. And children have excitedly expressed themselves about this interaction. मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला छावनी की छात्रा हूँ और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर।